everyone, this is Vishwa and welcome back to my channel. So today is 6th May and it's the morning. So good morning everyone. तो आज हमारी थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी है. So that's the reason I am vlogging today. तो आज का हमारा जो प्लान है कि आज हम करने वाले हैं बालकनी डेकोरेशन और वो भी थोड़ी यूनिक वे में. एंड देन वी आर गोइंग टू डू ए स्मॉल फोटोशूट, मतलब एक छोटा सा फोटोशूट करने वाले हैं. एंड देन विल गो फॉर लंच. और उसके बाद हम देखेंगे कि डेकोरेशन के लिए मैं कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आई शो द प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या गिफ्ट्स हमने एक दूसरे को दिए हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इट्स 10:30. तो अब हम फोटोशूट के लिए जाने वाले हैं, पर उससे पहले विल डू सम मेकअप. सो आई एम स्टार्टिंग विद द सीरम which we can use before our makeup. So I have applied the serum. Now I am going to use concealer to hide these dark circles and these pimple marks. And we'll blend it. So now I'll take Maybelline Fit Me foundation. Hide this pimple marks. Now we'll do some eyeshadow. So I'll choose this color. Ready for the photo shoot. Yay! So this is our place जहाँ पे हम फोटो शूट करने वाले हैं. As you all can see, यहाँ पे कितनी अच्छी ग्रीनरी है and our photographer is also ready.
आर बैक होम आफ्टर फिनिशिंग अवर लंच। मतलब सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि हमने ठूस के इतना खाना खाया था। सो लेट्स सी कि अमेज़ॉन से मैंने जो सारी चीज़ें ऑर्डर की है तो उसको ओपन करके देखते हैं। सो फर्स्टली मतलब कैनोपी के लिए हमने जो नेट ऑर्डर की है, सो विल ओपन दैट। सो दिस इज़ वाइट कलर्ड नेट। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो चेक कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर रुपीज़ 475 और 500। सो दिस इज़ वाइट कलर्ड नेट। ओके, सो ऊपर से ऐसे सर्कल जैसा है। सो डेकोरेशन पार्ट में आपको ये अच्छे से दिखेगा। सो बस मैं इसे अभी ऐसे ही रखती हूँ। सो नेक्स्ट आर द फेरी लाइट्स। सो फेरी लाइट्स कुछ ऐसी है, तो ये बहुत छोटी है, इसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। सो दिस वॉज फॉर रुपीज़ 250 और उसके अराउंड था। सो दिस वॉज ए पैक ऑफ 2। इसका भी मतलब मैं वीडियो साइड में ऐड कर दूँगी ताकि आपको पता चले कि इसकी लेंथ कितनी है। सो यहाँ पे आपको 2 बैटरीज लगानी पड़ेगी। बैटरीज यू विल हैव टू बाय योर ओन। सो दिस कम्स विदाउट बैटरी। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट वन। सो दिस आर आर्टिफिशियल ग्रास। तो हमने सोचा था कि बालकनी में नीचे आर्टिफिशियल ग्रास जैसा कुछ मैट जैसा बिछाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव ऑर्डर्ड दिस। इट्स वेरी बिग। ये भी पूरा डेकोरेशन में आपको अच्छे से दिखेगा, ये सारे प्रोडक्ट्स उसमें अच्छे से दिख जाएंगे। सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी देयर। वहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ यूज़ करने के बाद शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। तो ये पूरा बिछाने के बाद क्लियर पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द डेकोरेशन पार्ट। सो दिस इज़ अवर बालकनी और यहाँ पे हम डेकोरेशन करने वाले हैं। सो विल कीप द कैनोपी हियर और इसे पूरा हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। एंड येस, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। सी यहाँ पे वेदर कितना अच्छा है, ब्यूटिफुल वेदर एंड ब्यूटिफुल व्यू आफ्टर दिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेकोरेटिंग दिस बालकनी। The final result. This looks so pretty.